Today we have Indu Punj with us. Indu Punj is the founder of Stories Matter and is a teacher, trainer, and a counselor. She was director, teacher, training with Katha and has worked with many renowned schools. Today we are having a discussion with her on role of mothers in building future leaders. Let me ask a few questions and to Indu. Indu, mother-child bond is said to be the most precious and the closest and the strongest bond. Why do you think it is so? First of all, thank you, Mona, for having me on your show. I'm really delighted to share my experience as a mother, I would say. Yes, of course, mother is the most important person in a child's life as a primary caregiver, I would say. And otherwise, we say the bond starts 9 months before father. So, child is there in her body, growing within her, and imbibing everything that she undergoes during those 9 months. So the bond starts there, I would say, since inception, it begins. And even as per education point of view, also we say this is a mother child diet, which is the most important. Mother is the first teacher of a child, be it learning a language, be it learning emotions, be it the love. So I think nobody can replace it. So it would, this role is the most important. It goes without saying. Without saying, because you start feeling the child inside you, and when the child is kicking, तो वैसा लगता है कि something is so exciting. You are so Yes. that excitement, that happiness, you can't express that. So I believe that absolutely what you said, mother child bond की तरह तो कुछ हो नहीं सकता. It is also said that mother is the first teacher of the child. What skill set do you think a mother is building in a child? What skill set do you think she's building? See, if I speak as a psychologist here, even the toilet training that is done is also helping the child develop a kind of personality. So if we go as per the child development theories, they say how you have toilet trained your child. Is it done in a hurry, or this will make him an anxious child, or is it that you have allowed the child to take his own time? The way you even cajole a child, जैसे हम गोद में बच्चे को लेते हैं, the way we express our love, everything is a learning. Everything that a mother does with a child is a learning. Second, अगर हम और milestones के हिसाब से करें तो language development, like Hindi speaking mother, when she speaks in Hindi, child is automatically picking up. Then your values, your culture, uh, how we behave, everything, I think, ये तो पूरा holistic development start हो जाती है. The moment child starts even responding, much before they start speaking, there's a whole lot of learning which starts, and it starts with mother, the primary caregiver, we say, in which in Absolutely. case 99% cases is mother. Yeah, mostly it is mothers, and almost I think सब चीज ही, जैसे हम लोग कम्युनिकेशन कैसे बात करते हैं, और बात करने से ज्यादा तो जो नहीं हम लोग बात करते, हमारे एक्शंस ही बच्चे से इनवाइब कर लेते हैं. बिल्कुल, हमारी जो इमोशनल बॉन्डिंग विद द चाइल्ड वहीं से शुरुआत होती है कि किस तरह से हम बच्चे को अपनी गोद में लेके कंफर्ट करते हैं, सूद करते हैं, वी पुट देम टू स्लीप, एंड किस तरह से हमने उनको बड़ा किया, वो सारी वहीं से स्टार्ट हो जाती है पर्सनालिटी. Very, very true. Absolutely. Acha, if you have to tell a parent that your actions will build a future leader and what all they need to keep in mind to build a good leader, then what will you say? अगर आप तुमको बताना पड़े किसी पेरेंट को कि आपके एक्शंस एक फ्यूचर लीडर बना रहे हैं, आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो क्या बोलोगे आप? आई थिंक जैसे हम चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर लीडर्स में वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लाइक ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी. सो एज अ पेरेंट फर्स्ट मुझे वो रोल मॉडल करना पड़ेगा. आई कैन नॉट बी लाइक, आजकल मैं रोज एग्जांपल देती हूँ कि आई कैन नॉट बी वॉचिंग टीवी एंड टेलिंग माई चाइल्ड टू रीड अ बुक. Very So I true. have to sit with my child
hold a book and read along with him or her to give this value. तो Absolutely. ये यहीं से है कि अगर मैं चाहती हूँ कि वो इस तरह से एक स्पिरिचुअल हो या उसमें ऑनेस्टी हो, हम फिर अगेन सेकंड एग्जांपल देते हैं कि जाओ बाहर बेल बजिए, बोलो पापा घर में नहीं है। तो अगर आप खुद ये वैल्यू दिखा रहे हो बच्चे को, अपना रोल मॉडल आप ये कर रहे हो, तो बच्चा कैसे ऑनेस्टी सीखेगा? सो आई थिंक एज पेरेंट्स वी हैव टू give and those values we have to role model, and children are like sponges, they absorb, they are impressionable. The moment they see their parents doing things a certain way, they start following. Like I would give example of my father. Yesterday evening only I was speaking to him. At 85, he is publishing one article every day in Hindustan Times on his local newspaper. So I told him I want to be like my parents. I want to be, a contributor till I die. सो ये चीजें हमें कोई सिखाता नहीं है, हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं अपने पेरेंट्स को देखते देखते। मुझे लगता है कि यू शुड become like your father or your role model. Automatically your parents become your role models if they are giving those values. So as Absolutely. parents, अगर मुझे किसी भी पेरेंट को समझाना है, पहले आप वो करिए, बच्चा अपने आप करने लग जाएगा। 99% cases. Yes, there can be always exceptions, can always be there, but first thing, how you want to teach your child, you have to do it yourself. बट वो You have सबसे to पहले पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा, हमें पता भी नहीं लगता, बिकॉज वो इतना सबकॉन्शियस में वो हैबिट्स हो जाती हैं, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। आप तो इमोशंस की बात कर लीजिए। अगर हम दरवाजे वी स्लैम डोर्स एंड वी स्क्रीम एंड वी हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू रिएक्ट कि वो काम एंड कंपोज्ड रहे और वो टेंट्रम्स थ्रो नहीं करे? आप बच्चे को एक तरह से सिखा रहे हो कि जब भी गुस्सा आए तो दिस इज द वे टू रिएक्ट। इवन तो आई इसी एग्री, बहुत सारी जो नेगेटिव्स हमारी होती है ना, कई बार वो सामने दिखती है ना, तब पता लगता है कि ये गलत मैं कर रही हूँ, आई हैव टू रेक्टिफाई दैट। बट वो देखना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग बहुत अनदेखा कर देते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोग तो हमेशा ही हरी में होते हैं ना, सब चीज जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है बच्चों को टाइम चाहिए होता है बहुत ज्यादा। Second thing I want to say is कि हमें as parents with changing times with the new generation we have to be flexible and open-minded to accept their viewpoints. With growing children, you can't keep imposing your own ideas, what you have learned to 30 years old. So things will keep changing with changing times. अगर हम बच्चों के दोस्त बन के उनकी thought process को नहीं समझेंगे, so they will never feel connected with you. They'll never open up with you. They'll never be friendly. So यहाँ पे with the changing values or changing mindsets, we have to be open as parents, to be flexible, to at least listen to them with an open heart and mind. And yes, of course, as facilitator and as guiding members, we can be there. Like, in fact, I'm doing this topic, how to do a compassionate parenting. ताकि आप बच्चे के फ्रेंड ज्यादा बने, ना कि करेक्शन, लाइक यू आर नॉट अप्लाइंग करेक्शन ऑल द टाइम। Very true, very true. That is a very interesting topic, and I would love to attend that. Let's see, आप कहाँ पर, मुझे पता है तो लग ही जाएगा। हाँ, Okay, मैं I think वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली मैंने वही आज सुबह से सोच रही हूँ, तभी कि सारे आंसर उसी में आ रहे हैं मेरे। so very nice. Indu, we as women play a lot of roles in our lives. Every role takes time. You yourself must be managing multiple things. What tips would you give to youngsters for work-life balance? सबसे पहले मुझे जो आज की जनरेशन है गर्ल्स को, एज आई थिंक मोना इन योर वन ऑफ द टॉपिक्स आल्सो विद योर सन, यू हैव बीन डूइंग कुकिंग और यू हैव सेड कि हाउ कैन वी बैलेंस दिस, लाइक कुकिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? तो एक जो हमारी न्यू जनरेशन ने थोड़ा झंडा खड़ा कर लिया कि कुकिंग में नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट वे। आई एम नॉट प्रमोटिंग कुकिंग, बट it is part of your everyday life, जहाँ पे आप एक connection build करते हो family के साथ। When I cook a Absolutely. meal for my child or my husband or for my own self, I am creating a bond here, and it need not be only a female has to do here. It can be whosoever loves to cook can cook. Absolutely. सो ये शुरू से हमें ये स्टिग्मा अटैच नहीं करना कि मैं औरत हूँ, मैं वर्किंग हूँ तो मुझे नहीं करनी।
It is, of course, whosoever can do it should do it. It has nothing to do with as a gender, I would say. But I love cooking somehow, so I love, and I also love when my kids they enjoy food cooked by me. तो मुझे तो बहुत बॉन्डिंग फीलिंग देती है वो चीज, मुझे बहुत बड़ी हैप्पीनेस देती है। यहाँ पे मेरे को सारी गर्ल्स को एक चीज कहनी है कि इसको प्लीज एक वो मत बनाइए कि दिस इज समथिंग नेगेटिव। इवन आई थिंक सो, अग्रीड, मेरे आपके साथ एकदम, बिकॉज मैं तो जनरेशन को देखती हूँ, आप आपने भी ये तो टॉपिक ही किया हुआ है। ठीक है। सेकेंड चीज जो वर्क लाइफ बैलेंस में मी टाइम, हम व्हाई डू वी गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू एक्ट एज केयर गिवर्स एज वुमेन, वी ऑटोमेटिकली एज सिस्टर्स एज मदर्स एज डॉटर्स एज यू नो whosoever टीचर्स आई वुड से, हम ऑटोमेटिकली ये रोल ले लेते हैं कि वी आर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीबॉडीज कंफर्ट केयर लव अफेक्शन, कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सबके लिए ठीक है, पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए खुद के लिए भी है। अपने तो लिए भी आप अपने चाहिए। लिए मी टाइम निकालिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, डू फॉलो योर ओन पैशंस एंड take very good care of your health, nutrition, your exercise, your walk time, so that you are happy. When you are happy, you will spread happiness, and everything revolves around. I think a woman is the, you know, I would say life and एपिसेंटर, house शी इज द epicenter. सन एंड द एपिसेंटर, उसके Yes, आसपास if सब चीज she घूमता is है। happy, I'm sure everything around her is automatically happy. तो पहले अपने आप को खुश रखिए, अपनी खुशियों पर बहुत ध्यान दीजिए। एंड आप अपने आप को जब इग्नोर करते हैं, यू आर नॉट कंपैशनेट फॉर योरसेल्फ, तो आपका वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना कि मेरे को, मैं तो अपने लिए नहीं कर पाती, माय सन लव्स, कि जब सब्जी कम होती है तो मम्मी बोलती है नहीं नहीं मुझे तो भूख ही नहीं है, ये आई विल नॉट हैव दिस। सो डोंट डू दैट, you can always keep a portion for yourself. Same way in every happiness, and feel happy about everything around you. Pamper yourself and feel, when you are happy you will definitely spread that positivity around. तो ये मुझे लगता है वर्क लाइफ बैलेंस में सबसे पहले taking care of your own choices is extremely important. When you make a choice, you will definitely feel better. It's not imposed. कि कोई भी डिसीजन जब मैंने खुद लिया है तो मैं उसको खुशी खुशी निभाऊंगी। एब्सोल्युटली, ये तो बहुत अच्छा आपने जो कहा है कि यू आर हैप्पी देन यू विल स्प्रेड हैप्पीनेस, दैट गोज विदाउट सेइंग कि अपने आप के लिए टाइम निकालो, अपने आप को खुश रखो, तब सारी चीजें हो जाएंगी। क्या मोना, इसमें मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक जैसे आपने कहा कि यू एट टाइम्स लीव योर जॉब टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, तो अगर वो आपका खुद का डिसीजन है कि मैं, क्योंकि बच्चे मेरे नहीं संभल पा रहे या for whatever reasons, and you leave a job but you have chosen to be with your children, then respect your decision. वेरी क्योंकि 10-15 साल बाद जब आप दोबारा काम करना चाहें, then you shouldn't feel frustrated inside कि तुम्हारी वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी, and this is what has happened to my life. So it should be your call. If you don't wish to leave your job, don't do it. But then your children never asked you to leave your job. यस, And having a child was also your choice. Then leaving your job was also your choice. So your kids can't be held responsible for that. very true. That is a very, actually, it's a very pertinent topic you have brought up. We can't discuss that right now. But yes, I have seen that happen. And very rightly you said कि कोई ये नहीं कहना चाहिए कि बच्चे को नहीं कहना चाहिए, वो डिसीजन तुम्हारा ही होना चाहिए. Very right. So the work-life balance, there are very good tips that Indu has given to the young generation. And I think young generation is very aware, very, they have their own set of ideas. And if we can, work and understand them, I think they are way ahead of us, I think. मुझे तो लगता है Yes, they are. They are much more aware. They are much more aware than us. Okay, thank you, Indu. That is so nice to get your feedback and your ideas, and your having a discussion with you on this topic. Us, Thank you so much. Thanks a lot for having me on your show. All the best. Thanks a thank lot. you for coming to the show. Thank you so much.